So we are starting with the very first session of probability and binomial theorem. We define probability as chances of something happening. When we say probability of an event happening, now what is the event? What is the experiment? I'll tell you. Probability of something happening we calculate as number of favorable outcomes divided by number of total outcome, which is called sample space. Now, when you toss a coin, you expect outcome to be either heads or tails. You don't expect outcome to be 1, 2, 3, 4. So this is called an experiment. You don't know the exact outcome, but you have an idea that outcome is going to be one of these two. Collection of all outcomes is called sample space. We'll come back to this. If I roll a dice, I expect the outcomes to be 1, 2, 3, 4, 5, 6. If I have a pack of cards, we have 52 cards in a pack of cards. 26 we have red, 26 we have black, 13 we have diamond shapes, 13 we have heart shaped, 13 we have club shaped, and 13 we have spades. Within those 13, you need to know the sample space, you need to know the total outcome before you start solving questions. In every one of these 13, the numbering of the cards starts from 2, 3, 4. The numbering goes up to 10. These are called numbered cards. Then we have king, queen, and jack. These are called face cards. Ace is neither a numbered card, because when you say ace, it is heart. On the card, there will be one heart created. That's it. You will not have a number on the card. You will not have a face on the card. You'll have a heart on it, because this is diamond. So depending upon the kind of suit you are in, the ace will have a design or a shape on it. So ace is neither a numbered card nor a face card. Ace is just a card. You want to create a category, you can combine these two and create cards of honor. Ace and king, queen, jack together can be called cards of honor. Now these are called sample spaces. So when you perform a toss of a coin, the sample space has 2 elements in it. When you roll a dice, the sample space has 6 elements in it. When you pick a card, the sample space has 52 elements in the sample space. Sample space is collection of all possible outcomes in an experiment. What is the experiment? You don't know the exact outcome, but you have an idea that outcome will be part of the sample set. So if I ask you what is the probability that I roll a dice and I get a prime number on the outcome. So I have to go inside and see this is a prime number, a prime number, a prime number. There are 3 prime numbers out of 6. These are the favorable elements, primes. If I say I roll or I toss a coin, what is the probability of getting a heads? There is 1 heads out of 2 elements. What is the probability I will get a king card? When I pick a card, I will get a king card. How many kings are there? 1, 2, 3, and 4. Each suit, the designs are called suits. Each suit has a king. There are 4 kings out of 52. This is the definition of probability. Probability are chances of some event happening, and probability is calculated as number of favorable outcomes upon total outcomes. Write down all of this, comment done.
when we perform multiple experiments, if I say I'm going to toss two coins or I'm going to toss same coin twice, it makes no difference whether the coins are same or it is the single coin you're tossing again or coins are distinct. You're performing two tosses, so the outcome can be heads heads, outcome can be heads tails, outcome can be tails heads, outcome can be tails tails. This is called a compound experiment. You're performing two things. So see, in one toss, the sample space will be two, heads or tail. In second toss, the sample space will be two. So when you toss two coins, the sample space total will be the multiplication of individual. If I say I'm going to toss a coin and roll a die or roll a dice, so I can expect heads with a 1, I can expect heads with a 2, heads with a 3, I can expect heads with a 6. I can expect tails with 1, tails with 2, I can expect tails with 6. This is the way of writing compound outcome. You must write them with commas side by side in a parenthesis. Curly brackets contains all outcomes. So you see, one toss will have two outcomes and one roll of a die will have 6 outcomes. So total outcomes in roll and toss is 12. You count here, there are 12 outcomes. So whenever you perform a compound experiment, the total sample space is a multiplication. Here, there's a lot of confusion regarding dice. I'll show you. If I perform two rolls, same die twice or two separate dies makes zero difference, makes no difference. Outcome can be 1 1, outcome can be 1 2, outcome can be 1 3, outcome can be 1 6, outcome can be 2 1, outcome can be 2 2, outcome can be 2 6, 3 1, 3 6. This will continue. Outcome can be 6 1, outcome can be 6 6. So how many outcomes are there? One toss or one roll will have 6 outcomes. Another roll will have 6 outcomes. If you perform both, the total outcomes for you would be 6 into 6, 36. So there is one thing you need to learn here. The order matters. When you perform two tosses, whether it is head tail or tail head, there are two separate outcomes. Here 1,6 and 6,1 are two separate outcomes. The order matters. See, in 1 1, in 2 2, in 6 6, it is the same outcome. There is no need to reverse it. But when you have outcome 1,6 and 6,1, they are counted separate. So what I want to write down here is, in compound experiments of the same type, order matters. If I say I'm going to select two cards, one after other, I want there to be a king and a queen. So it matters whether you are considering the first one as the king or second one as the queen. You can reverse the order as well. So language. In same kind of experiment, if done twice or more, order matters. You can I'll elaborate more on this with examples. In terms of theory, we do not have a lot of theory in probability because probability borrows concepts from PNC. Concepts of arrangement, selection, sequencing, distribution. We borrow all of those from PNC. Copy this down, mention this. When experiment of same type is performed more than once, the order of the outcome matters. Comment done.
Yes, comment done. We'll move on. Now here, if I create a question for you, two dice have been rolled. What is the probability that the addition of the two outcomes is going to be a prime number? Give it a try. Two dice have been rolled. I'm creating a simple example for you to understand the concept of probability and how the order matters. Order will always matter in such questions. Question is, two dice have been rolled. What is the probability the addition of two outcomes is a prime number? Addition of two outcomes is a prime number. So you need to understand when you add outcomes, what is the smallest outcome you can expect on two rolls of dice. You can expect there to be 1 plus 1, which is 2, or the largest outcome you can expect is 6 plus 6, which is 12. So you can create all the numbers from 2 to 12. Now, what are the prime numbers from 2 to 12? 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number. These are the favorable outcomes: 2, 3, 5, and 7, 11. I can create 2 in only one way, 1 comma 1. How can I create 3? 1 comma 2 and 2 comma 1. They will both be considered 1, 2 and 2, 1. How can I create 5? 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. How can I create 7? I can create 7 as 1, 6, 6, 1, 5, 2, 2, 5. How can I create 11? 6, 5, 5, 6. So how many total cases have I got favorable? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13. There are 13 ways in which I can have addition as a prime number. 2, 3, 5, 7, and 11 are the only prime numbers you can create as addition of two outcomes. How many total outcomes do we have? 36. Because there are two roles, total outcomes will be 36. 13 by 36. That is the probability. One more very good concept I wanted to learn here is the smallest outcome for two dices is 1 plus 1, 2, and the largest outcome is 6 plus 6, 12. What is the average of these numbers? What is the average of these numbers? The average is 7. You will notice the average outcome. See, I've missed some numbers here. See, 3, 4 is missing. 3, 4 and 4, 3 is missing. The 15 agavita. 15 by 36. 3 cancel. 5 by 12. That is your answer. So I was telling you here, the average outcome, the middle outcome will always have maximum ways. And because ways are maximum, the probability will be maximum for this. Yeah, highlight कर लो, कहीं ना कहीं पे लिख लो, the average outcome will always have maximum probability
or maximum number of ways. Average outcome, ये wording use करना, average outcome will always have maximum probability or maximum number of ways. Sure, moving on. Now, what happens when you have to perform probability on multiple events? Like if I ask you for a probability of, what is the probability that when I roll a die, the outcome, single dice I roll, what is the probability the outcome is either prime or even? How is this read as? This is read as probability of event A or event B. So it is calculated as probability of A plus probability of B minus probability of A and B. This is slightly related to set theory. When you have A union B, either you want A to happen or B to happen. See, it will be written as probability of a prime number plus probability of a even number minus probability of prime and even. So if you remember the outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6, what are the prime numbers here? This is the prime number. This is the prime number. This is the prime number. There are 3 out of 6. How many even numbers are there? 2 is an even number, 4 is an even number, 6 is an even number. There are 3 out of 6. Now, is there any number which is prime and even? ऐसा कोई number है which is prime and even? 2 देखो दोनों जगह काउंट हो गया, तो ये एक ओवरलैप है. एंड मीन्स कॉमन पार्ट ओवरलैप, तो ये -1/6 हो जाएगा. The answer would be 5/6. So I was trying to teach you probability of A union B. और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? If we have probability of A union B union C, थोड़ा रेयर है बट 3 सेट तक आ रखा है. Probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A and B minus probability of B and C minus probability of A and C plus probability of A and B and C. थोड़ा दिखने में बड़ा है but I want you guys to have all the theory ready. If you face a difficult question in CAT, you should have the tools ready. लिखो इसको, highlight करो. लिखो confirmation on this. Good. So we can experiment with this. I want you to focus on this end वाला part जो होता है. It is very common in CAT and other exams. See, if I say there's an exam and there are two people, Ramesh and Suresh. What is the probability
Ramesh and Suresh will pass the exam. बिकॉज एग्जाम में एक बंदे का पास होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता. These are called independent events. When you have to calculate probability of A and B and the events are independent, you calculate the probability as PA multiplied by PB. So whatever is the value given to us, Ramesh का एग्जाम क्लियर करने का and Suresh का क्लियर करने का, you simply multiply to get the answer. For independent events, like if I ask you, I am going to perform a toss of 2 coins. What is the probability of getting a heads and a tails? क्या probability है? So what you can do is you can go into the set head comma head, head comma tail, tail comma head, tail comma tail. मेरे हिसाब से because I'm looking for head and a tail, these two are my favorable outcomes out of 4, which is 1 by 2. But do you remember the if I'm tossing 2 coins, the coin 1 does not impact the coin 2. अगर same coin भी हुआ, आपने अलग अलग 2 बार toss किया, one of the coins does not impact the other coin. So could you not calculate this as probability of heads multiplied by tails? Heads का probability 1 by 2, tails का 1 by 2. Can you interchange the order? Yes. So you see your answer did not change. So whenever events are independent, आपको क्या करना है? Multiply कर देना है. Is it possible that I toss the same coin and I get even outcome and the odd outcome at the same time? No. These are called exclusive events, mutually exclusive. अगर event even होगा, it will never let the other happen. Even and odd साथ में नहीं आ सकता same dice पे. So these are called mutually exclusive. या फिर ऐसे suppose करो, अगर ये job interview के लिए जाते, रमेश and Suresh are going for job interview और एक ही job है, एक ही job है. Is it possible that they will both get the job? No. इनको बोलते हैं mutually exclusive events. पहले वाले कौन से थे? Independent. Independent. ये कौन से हैं अभी? ये वाले what are these? These are mutually exclusive. थर्ड वेराइटी कौन सा है? डिपेंडेंट. जैसे आपको थोड़ी देर पहले प्राइम एंड इवन चाहिए था, प्राइम एंड इवन, और उन दोनों में एक ओवरलैप था. दिस वाज द ओवरलैप. 2 इज अ नंबर व्हिच इज अ प्राइम एंड आल्सो इवन. तो कभी भी अगर दो एलिमेंट्स में आपस में लिंक है, ओवरलैप है, in that case you have to go into the sample space and find out the common overlap between them. Common overlap milega, then only you can go on to calculate the final answer. Dependent event bolte hain, these are called dependent events. There's a common overlap. This is independent event. एग्जाम क्लियर करने में रमेश सुरेश का आपस में कोई लिंक नहीं है. These are exclusive events. तो 90% क्वेश्चंस जो आप बनाओगे वो ये वाले बनाओगे, आप सीधे मल्टीप्लाई करने वाले. टेक 1 minute, कॉपी दिस डाउन, कमेंट डन.
let us move on. Let us build upon these concepts. Now मैंने आपसे कहा the order always matters. जैसे मैं आपसे अभी कह रहा हूँ, I'm going to perform 5 tosses. 5 tosses. What is the probability I will have exactly 3 heads? I will get 3 heads on 5 tosses. So please understand, I want 3 heads means I want 2 tails on these 5 tosses. Now see, it could be heads, 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 tails, tails. It could be heads, tails, heads, tails, heads. It could be heads, tail, tail, heads, tails. There can be heads. There can be multiple arrangements. So as I have already said, the order always matters. So what you need to do is, there are 5 empty slots. You need to select out of these 5, which 3 do you want to be heads. Let us say you have selected these. The others will become tails by default. So this is the arrangement part. Then does the first head impact the other, or does the first one impact the other? No. So it will be probability of heads cube, probability of tails square. You're basically saying it is probability of heads into probability of heads into probability of heads, because they are independent events, into probability of tails into probability of tails, and so on, so on. So let me complete the calculation for you. How much is 5c3? It is 10. 5c3 is as good as 5c2, 10. What is heads? 1 by 2 cube, 1 by 8. What is tails? 1 by 2 square, 1 by 4. 2 cancelled 5 times, so 5 by 16. I call this repetitive probability. I'm performing same thing again and again. Lot of books call it binomial probability. Binomial probability. Doesn't matter, you're performing same event again and again. So you can call it whatever you like. The only thing is, don't get the answer incorrect. Again, take a minute or so, write it down. What if there were more coins? Let us say I'm just creating a small example. I am performing 50 tosses. 50 toss. What is the probability of getting 40 heads? So it will turn into 50 में से कहाँ कहाँ पे आपको heads चाहिए, 50C 40. Location must be determined. ये arrangement वाला part है. Into. Now probability of heads and tails both are usually equal. It's an unbiased coin. 1 by 2 to the power आपका क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, क्योंकि 40 आपको heads मिलेगा, 1 by 2 to the power 40 and 1 by 2 to the power 10. ये heads है और ये tails है, दोनों multiply होके same बन जाएगा. Write this down. Make sure you're writing this down. Confirm done. We will move on. Moving on from this. Now there is something called as odds in favor, odds against. Like
probability, the probability is not given. We say odds in favor. Odds in favor of A are 2 by 3. Or we say odds against B are, let us say, 3 by 4. So how do we calculate probability from odds? अगर odds given है, how do we calculate probability? When you say odds in favor, तो हमेशा सामने favorable outcome होता है और आखिरी में against. So there are 2 outcomes in favor of A. There are 3 outcomes against A. There are total 5 outcomes. That is probability of A. When we say odds against, तो सामने against value लिखी होती है और favorable पीछे लिखा होता है. आपने कहा odds against B are 3 by 4. तो फेवरेबल आउटकम 4 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी 4 अपॉन टोटल, 4 फेवरेबल 3 अगेंस्ट, टोटल 7. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी फ्रॉम फेवरेबल ऑड्स एंड अगेंस्ट ऑड्स. लिख लो इन चीजों को. और रिवर्सल, अगर मैं आपसे कह दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इवेंट सी, प्रोबेबिलिटी इज 5 by 11, तो उसके ऑड्स इन फेवर कितने होंगे? तो 5 फेवर में है और 6 अगेंस्ट में, तो इसको बोलेंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ सी. अगर आपको चाहिए ऑड्स अगेंस्ट सी, देखो 5 उसके फेवर में है, टोटल 11 है, तो उसके अगेंस्ट में 6 आउटकम्स हैं और फेवर में 5. अगर सामने अगेंस्ट लिखा है तो यहाँ पर सामने अगेंस्ट लिखना आपको. अगर सामने फेवर्ड लिखा है तो सामने फेवर्स लिखने आपको. दैट्स ऑल. This is called concept of odds in favor, odds against. लिख लो इस चीज को. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी रिसेंट ईयर्स में नहीं आया है, बट आया तो क्या होता है, I'll explain that to you with examples. We have put enough examples in the class sheet. Odds in favor and odds against. एक concept आप यहाँ लिख लो. For a same event, probability of happening of the event and probability of not happening of the event will always add up to 1. अगर A के होने की probability let us say 2 by 5 है, तो A के नहीं होने की probability will be 1 minus happening. तो negative probability या negation की probability के बार requirement पड़ती है. यहाँ पे भी आप कर सकते थे. A के होने के 2 chances out of 5, तो A के नहीं होने के 3 chances out of 5. Probability of happening and not happening will always add up to 1. ये इसका complement है. So complement and the probability adds up to 1 always. Complement of the probability and the probability itself will always add up to 1. तो fundamental theory हमने probability की सारी कर ली. What is a sample space? What is a favorable outcome? Dependent event, independent event, probability का union का formula we have seen for up to 3 probabilities. तभी मैंने आपको दिखाया odds in favor, odds against. तो एक मेजर टॉपिक हमारा बचता है continuous probability भी हमने देख लिया. हम repetitive probability कहते हैं. repetitive probabilities एक ही सिक्के को 5 बार उछाल रहे हैं, एक ही डाइस को 4 बार रोल कर रहे हैं. repetitive probability. The sequence always matters. एक और मैंने बहुत की पॉइंट आपको करवाया अभी, that is happening of the event and not happening of the event will always add up to 1. We will start with questions. हर तरह के सवाल हैं, जीरो लेवल से लेके एडवांस लेवल तक हर तरह के सवाल हैं. 60 plus questions we have for probability alone. Comment done. We'll start with questions.
Moving on. So go on, give it a try. Take a minute. Eight people are to be arranged in a row. What is the probability there are exactly three persons between A and B? A and B are part of these eight people. Take a minute or so, give it a try. आपको 8 लोगों को अरेंज करना है और ए और बी उन दोनों के ए और बी के बीच में 3 लोग होने चाहिए आउट ऑफ दीज 8. देखो ऐसे क्वेश्चंस में दिस इज क्लियर दैट आपको 8 लोगों को अरेंज करना है. दैट इज counting every possibility, so your sample space is 8 factorial. Counting all possibilities. अब आपने कहा that A और B के बीच में 3 लोग होने चाहिए, तो you have to manually create these cases. Does it matter कौन से 3 लोग? No. So don't perform any selections कि हम select कर लेते कौन से 3 लोग. अगर ये A है तो इनको छोड़ के B will have to be here. ये एक possibility है. If this is A, इनको छोड़ के B will have to be here. ये second possibility है. अगर ये A का जगह है तो ये थर्ड पॉसिबिलिटी है. अगर ये A का जगह है तो ये लास्ट पॉसिबिलिटी है. तो A को बैठाने के 4 पॉसिबिलिटी. कैन आई से अगर A बैठ गया तो B बैठ जाएगा. बट इज इट ओके इफ आई रिवर्स इट? आपने कहा A और B के बीच में 3 लोग हैं, मैंने B को आगे रख दिया, तो ये आपने क्या किया कि आपने A और B को बिठा दिया. अदर देन A और B हाउ मेनी मोर पीपल आर देयर? 5 मोर. तो आपको दिख रहा है ये एम्प्टी स्पेस, ये 5 एम्प्टी स्पेस. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. एक जो ज्यादा बना ली क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ये दो बैठ गए तो 6 बचे ना बेटा, 6 बचे ना. 6 फैक्टोरियल. ये आपका आंसर. ये A और B के बैठने का तरीका और ये बाकी लोगों के बैठने का तरीका. 6 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल. तो अभी स्क्रीन पे थोड़ा सा ना संभल के देखना है. डू यू सी दैट आंसर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन? चेक कर लो एक बार. व्हाट इज दिस? दिस इज 6. 6 into 5 तो बेटा ये 6 फैक्टोरियल बन गया ना. 2 into 6 फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल. क्या मिसिंग है? 4. cannot be the answer. Cannot be the answer. Can this be the answer? No. No. यहाँ तो 7 आ रहा है, न्यूमरेटर में तो 7 है ही नहीं, तो आंसर इज नन ऑफ these. Learn these tips, learn these tricks. Let me know if this is clear.
ए और बी को हमने क्यों मैन्युअली बिठाया? देयर इज नो अदर वे। आपको ए और बी के बीच में 3 लोग चाहिए ही चाहिए। Try. 3 boys and 4 girls are to be arranged around a circle. What is the probability no 2 boys are adjacent to each other? कितनी लड़कियां बिठानी है? 4 लड़कियां। लड़के कितने बिठाने हैं? 3। What is the probability that no 2 of them are together? No 2 boys are together. मैंने आपसे वही कहा था, probability takes a lot of concepts from permutations and combinations. तो देखो, सबसे पहले तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? टोटल आपके पास कितने लोग हैं? टोटल आपके पास 7 लोग हैं। In how many ways can you put 7 people on a circle? 7 minus 1 factorial. तो आपका जो सैंपल स्पेस है वो 6 फैक्टोरियल। सैंपल स्पेस मींस all possibilities considered. It is 6 factorial. अब आपको क्या चाहिए? लड़के साथ में नहीं होने चाहिए। तो व्हाट यू डू, यू अरेंज गर्ल्स फर्स्ट। कितनी गर्ल्स हैं? 4 गर्ल्स हैं। हाउ कैन यू अरेंज 4 गर्ल्स? 3 फैक्टोरियल। मान लो ये गर्ल 1 है, ये गर्ल 2 है, ये गर्ल 3 और ये गर्ल 4। अब जो बॉयज हैं, इफ दे डोंट वांट टू बी टुगेदर, तो उनको ये जगह ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तो how many ways can I place 3 boys in 4 places? I can write it as 4p3। मैं 4 जगहों पे 3 लड़के अरेंज कर रहा हूँ, which will translate into 3 factorial into what is this? 4 factorial upon 1 factorial upon 6 factorial. So basically 3 into 3 factorial into 4 factorial upon 6 factorial. ये रहा आपका आंसर। क्योंकि ये अलग जगह है। this is a place between girl 1 and girl 4, girl 1 and girl 2. The places have their definitions. These places have their definitions. Good. Try. There are 12 balls in a bag. Out of them,
4 are red in color, 5 are green in color, 3 are blue in color. Vicky picks 3 balls randomly from the bag. Then what is the probability that all 3 of them are not of the same color? जो तीनों के तीनों बॉल हैं वो सेम कलर के नहीं होने चाहिए. कैसे अप्रोच करेंगे? क्रिएट अ स्ट्रेटजी. तो देखो, 2-3 तरीकों से वी कैन अप्रोच. आपने कहा सारे के सारे सेम कलर के नहीं होने चाहिए, तो हो सकता है एक रेड हो, एक ग्रीन हो, एक ब्लू हो, तीनों एक एक टाइप के. और इट कैन बी रेड रेड ग्रीन, इट कैन बी रेड रेड ब्लू, or it can be green green blue, it can be green green red, it can be blue blue red, it can be blue blue green. आप मुझे सोच के बताओ, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 वैल्यूज कैलकुलेट करना, अलग अलग उनको ऐड करना, ये आपके लिए आसान होगा या फिर आपके लिए ये आसान होगा कि आप रिवर्स सोचो, क्या नहीं होने देना? रेड 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 नहीं चाहिए. क्या नहीं चाहिए? ग्रीन 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 नहीं चाहिए. ब्लू 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 नहीं चाहिए. तो ये नहीं होने देना है. तो 1 माइनस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी यू नीड. तो 1 माइनस, अगर आपको तीनों रेड चाहिए तो रेड कहां से आएंगे? यहां से आएंगे. 4 कॉम्बिनेशन 3. अगर आपको तीनों ग्रीन चाहिए तो ग्रीन कहां से आएंगे? यहां से. 5 कॉम्बिनेशन 3. अगर आपको तीनों ब्लू चाहिए तो 3 कॉम्बिनेशन 3. टोटल कितने बॉल्स हैं? 12. 12 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करना इज द सैंपल स्पेस. तो ये इजी होगा आपके लिए कैलकुलेट करना. मैं करता हूं 1 माइनस, क्या ये 4 कॉम्बिनेशन 3 इज 4. 5 कॉम्बिनेशन 3 का मतलब है 5c2 which is 10 and 3c3 is 1 अपॉन नीचे क्या है? 12 11 10 अपॉन 3 2 1. 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 कैंसल. अब मेरे पास क्या वैल्यू है? थोड़ा पेशेंस चाहिए. 1 माइनस 15 अपॉन 2 इंटू 11 इंटू 10. ये कैंसिल हो गया आपका 5 इंटू 3, ये कैंसिल हो गया 5 इंटू 2. तो आपका क्या आएगा? 1 माइनस 3/44. 1 माइनस 3/44. तो 41/44 आएगा कैलकुलेशन. ध्यान दो आप, 41/44 आएगा बेटा. कैलकुलेशन पे ध्यान दो आप. 41/44 आएगा आपका. Not all of them are same. That is your answer. Take your time. पहले observe करो क्या mistake हो रहे थे. Complete this question and then comment down. Not all of them can be of same color.
try this. Three identical dice are rolled together. What is the probability that product of all three outcomes of the dice will be a even number? Take 2 minutes. Think over this. क्या कह रहे हैं? Then give it a shot. देखो, when you want the product to be even, आपके पास तीन आउटकम आएंगे. You are doing what? You are rolling three dices. तो आपके पास तीन आउटकम आएंगे. अगर तीन में से एक भी इवन हो गया और बाकी ऑड हो गए, द आउटकम इज इवन. अगर तीन में से दो इवन हो गया और एक ऑड हो गया, तो आउटकम इज स्टिल इवन. अगर तीनों के तीनों इवन हो गए तो भी आउटकम इज इवन. आपको प्रोडक्ट चाहिए. प्रॉब्लम क्या है? व्हेन यू हैव ऑड 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 is always odd. ये नहीं होना चाहिए. This must not happen. This should not happen. अभी क्योंकि आपका डाइस है तो क्वेश्चन आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए था. देखो, डाइस में 1 2 3 4 5 एंड 6 ये तीन नंबर ऑड है. तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंगल ऑड नंबर? तीन ऑड नंबर आउट ऑफ 6. प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज 1/2. तो आपको ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड ये नहीं होने देना था. 1 minus 1/2 1/2 1/2 7/2. तो ये कॉम्प्लीमेंट वाली प्रोबेबिलिटी और लर्निंग थ्रू एग्जांपल्स. जो चीज नहीं होने देनी यू सब्ट्रैक्ट. अदरवाइज ऐसे केसेस बनाते बैठोगे. लिसन टू दिस. अब ये भी मैटर करता है कि ऑड पहले आया कि इवन पहले आया. दैट मैटर्स. द ऑर्डर मैटर्स. इवन है कि पहले ऑर्डर. इसमें भी ऑर्डर निकालना पड़ेगा. इसमें ऑर्डर की जरूरत नहीं. ऑल इवन इवन इवन. इसमें ऑर्डर नहीं चाहिए. तो इतना सारा कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा आप ये निकाल लो, ऑड ऑड ऑड. There is 7/8 probability that the multiplication will be a even number.
Moving on, try this. Two cards are drawn simultaneously from well-shuffled pack of cards. What is the probability of both being non-honor cards? अब honor cards किनको बोलते हैं? King, Queen, Jack and Ace. Ace को अगर आपने काउंट कर लिया King, Queen, Jack के साथ में, so they become cards of honor. Two cards are drawn simultaneously. उनको एक साथ पिक करना है. Together they need to be picked. There are how many cards? There are 52 cards. उसमें से King, Queen, Jack, Ace. These are cards of honor. तो ऐसे 4 cards होंगे हर जगह पे. Hearts में भी 4, clubs में भी 4, diamonds में भी 4, spades में भी 4. तो ये 16 cards हमारे काम के नहीं है. So remaining cards are 36. How many cards are we going to select? 2 cards. So 36C2. That is our favorable outcome. हमने honor वाले जो cards हैं उनको remove कर दिया. Total cards कितने हैं? 52. C2. तो your probability is 36 into 35 upon 2 into 1. 52 into 51 upon 2 into 1. Cancelled. Make sure you are cancelling everything that can be removed. 4 into 9, 4 into 13. 3 into 3, 3 into 17. So I have 35 into 3, 15 105, 105 upon 13 into 17. 13 into 17 should be 221. So if you ask me among the options 221, none of these. एक बार calculations check कर लो. Out of 52, 16 cards are gone. So 36 cards remain. 36 में से कोई भी 2 select करना है favorable outcome. That is 36 into 35 upon 2 into 1, which is correct. 52 into 15 upon 2 into 1, cancel. ठीक है. So that is 4 into 9, 4 into 13, cancel. 3 cancelled, 17. Perfect. 105 by 221. ये आपका आंसर है. None of them are honor cards. None of them are honor cards.
Moving on from this, try. Take 2 minutes, give it a try. When two dice are thrown simultaneously, what is the probability the sum of scores on the dice is less than or equal to 5? थोड़ा संभल के ये पार्ट पे ध्यान देना. Probability is that the sum is less than equal to 5. आपको जो sum चाहिए दो outcome का वो less than equal to 5 चाहिए. Try. देखो, smallest addition can be 2. 2 बनाने का एक ही तरीका है 1,1. Addition can be 3. 3 बनाने के दो तरीके हैं 1, 2 and 2, 1. Addition can be 4. 4 कैसे बन सकता है 1, 3, 3, 1 and 2, 2. 5 कैसे बन सकता है 1, 4, 4, 1, 2, 3, 3, 2. ये मैन्युअली ही करना है. देयर इज रॉकेट साइंस. आपने का एडिशन शुड बी लेस देन इक्वल टू 5. तो 1 वे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 outcomes are there favorable out of 36. 2 into 5, 2 into 18. हमें क्या चाहिए था एडिशन चाहिए था हमें लेस देन इक्वल टू 5. लेस भी चलेगा और इक्वल भी चलेगा. Moving on, Travis. 100 cards are numbered from 1 to 100. What is the probability of getting a prime number? For this question, you need to know how many prime numbers up to 100 are there. ये CET लेवल का क्वेश्चन है. CET में 3-4 बार आ चुका है. Up to 100 there are 25 prime numbers. तो अगर 100 कार्ड आप पिक करने जा रहे हो कोई एक कार्ड, there are 25 prime numbers out of 100. That is favorable element upon sample space 1/4. सोचना ही नहीं है. there are 25 prime numbers. अगर आपको लिस्ट चाहिए, मैं आपको नंबर्स भी कह चुका हूँ. Remember, prime numbers up to 100 बहुत कम आएंगे.
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये सब याद होने चाहिए आपको. A box of 20 bulbs contains 8 defective bulbs. A box of 20 bulbs contains 8 defective bulbs. 2 bulbs are taken out at random from this box. Then the probability that at least one is defective is. आपके पास 20 बल्ब्स हैं, 8 डिफेक्टिव हैं, 12 वर्किंग हैं. आपको कितने सेलेक्ट करने हैं? आपको रैंडमली सेलेक्ट करने हैं 2 बल्ब. 2 बल्ब्स आर सेलेक्टेड. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? एट लीस्ट वन इज डिफेक्टिव. कम से कम एक डिफेक्टिव होना चाहिए. 20 में से डिफेक्टिव 8 है, वर्किंग 12. आप देखो कैसे बनाओगे इसको. टेक अ मिनट और सो ट्राई. देखो, you want at least one defective. There's a possibility both are defective. 8 combination 2. There's a possibility there is one defective and there is one working out of 20. कौन सी बड़ी बात है? 8 combination 2 is 8 into 7 upon 2 into 1. 28 आ गया. This is 8 into 12, 96. So numerator is 28 plus 96 is equal to 124. What is the denominator? What is denominator? 20 into 19 upon 2 into 1. Cancel, cancel, 190. Whatever you can cancel, do it. आपका आंसर रेडी है. I can see 19 का मल्टीपल तो कहीं भी नहीं है. 2 into 62, 2 into 95. ये 2 into 31 है and this is 5 into 17. 5 into 19. There is no common factor. ये आपका आंसर है. आपने कहा 2 bulbs are selected, at least one should be defective. तो 2 possibilities, 1 defective, 1 working, both defective. तो दोनों possibilities आप count करोगे, आप out of total. Try this. Tickets number 1 to 20 are mixed up and then a ticket is drawn at random. What is the probability the ticket drawn has a number which is a multiple of 3 or 5? बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन. टिकट नंबर्स 1 to 20. आपने कितने टिकट ड्रॉ करे? 1 टिकट. A ticket is picked up or drawn at random. What is the probability the number drawn is a multiple of 3 or 5? कैसे करना पड़ेगा? Multiple of 3 का probability, multiple of 5 का probability minus multiple of both. दोनों का multiple क्या होगा? 15. ऐसा. तो up to 20 क्या multiples हैं 3 के? 3, 6, 9, 12, 15.
18, ये अप टू 20 मल्टीपल्स है 3 के। 1 2 3 4 5 6, 6 आउट ऑफ 20। 5 के मल्टीपल्स क्या है? 5 10 15 एंड 20। तो ऐसे 4 मल्टीपल्स हैं 5 के जो हमारे फेवरेबल हैं। अब ऐसा कौन सा मल्टीपल है विच इज बोथ? ऐसा एक ही मल्टीपल है। यहाँ 15 मत लिख देना, कितने, ऐसा एक ही है, आउट ऑफ 20। 6 प्लस 4 10 माइनस 1 9/20। तो बेसिकली ए यूनियन बी का आपको फॉर्मूला रिपीट करने का मौका मिल गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। दोनों का प्रोबेबिलिटी साथ में जब आता है उसको माइनस करते हैं। इन सेट थ्योरी वी विल रिविजिट दिस, एक बार फिर से देखेंगे हाउ इट वर्क्स इन सेट थ्योरी। टेक योर टाइम, कॉपी दिस डाउन, कमेंट डन। Good. Moving on. Try this. बहुत ही आसान है। आपको वन कार्ड ड्रॉ करना है 52 में से। What is the probability the card drawn is face card or a card of heart? हाँ, यहाँ थोड़ा इशू आ गया। There is a common overlap. सोचो सोचो सोचो, टेक 2 minutes। आपको चाहिए एक ही कार्ड, एक ही कार्ड। इट शुड बी आइदर अ फेस कार्ड और अ कार्ड ऑफ हार्ट। ये जो फॉर्मूला अभी आपने लगाया ना, ये फॉर्मूला जो लोअर स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। चलो ट्राई करो उसको यहाँ अप्लाई करने का। टेक अ मिनट और सो। तो देखो फेस कार्ड कितने होते हैं, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? किंग क्वीन जैक हर जगह पे 12, 12 आउट ऑफ 52। हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर ऑफ हार्ट? हार्ट देयर आर 13 कार्ड्स आउट ऑफ 52। नाउ हाउ मेनी कार्ड्स हैव फेस एंड आल्सो हार्ट? क्योंकि वो दो बार काउंट हो गए, तो किंग क्वीन जैक अपॉन 52। So 12 plus 13 minus 3, that is 10 plus 12, 22 upon
52, that is 11 upon 26. This question we already have solved, that all three balls are not of same color. This question we already solved. I'll remove it. Try. A box contains tickets from 1 to 16. 3 tickets are to be chosen to give 3 prizes. What is the probability that at least 2 tickets from container, 2 tickets contain number which is multiple of 5? थोड़ा सा संभल के यहाँ पे लैंग्वेज में हम कितने प्राइस सेलेक्ट करने वाले हैं? 3। कम से कम 2 टिकट्स में मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। कम से कम 2 टिकट्स मल्टीपल ऑफ 5 होना चाहिए। सो कौन सा मल्टीपल, ये भी तो मैटर करेगा ना। And the order will also matter. So go on, try. आप कह रहे हो 2 टिकट्स पे मल्टीपल ऑफ 5 या फिर all 3 पे मल्टीपल ऑफ 5. So what are the multiples of 5? 5, 10 and 15 are multiples of 5. तो मेरे पास 3 नंबर है, मेरे को तीनों चाहिए 3C3. अभी अगर आपको 2 मल्टीपल चाहिए 5 के, तो इनमें से कौन से 2 इज इंपॉर्टेंट? 3C2. अब अगर 2 मल्टीपल्स ऑफ 5 है, तीसरा नंबर जो नॉन मल्टीपल है, 16 में से आपने 3 नंबर हटा दिए विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, तो बच गए 13 नंबर्स। इन 13 में से कोई भी एक चलेगा। So what is this? 2 multiples of 5, 1 non multiple, all 3 multiples of 5. आपने कहा कम से कम 2 मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए, तो 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल दोनों काउंट हो गए। आउट ऑफ हाउ मेनी? 16 कॉम्बिनेशन 3। थोड़ा एफर्ट लगेगा। 3C2 is 3 into 13, 39. 3C3 is 1, which is 40 upon 16, 15, 14 upon 3, 2, 1. जो कैंसिल कर सकते हो कर दो। 3 into 5, 2 into 7, तो आपको क्या आ जाएगा नीचे? 16 into 5 into 7. मेरे को लग रहा है और कैंसिलेशन पॉसिबल है। This is cancelled 8 times, this is cancelled 2 times, so 1 by 14 is the answer. Take your time, observe, understand what have we done here. Moving on.
An integer is chosen from the first 50 integers. What is the probability it is a prime or a multiple of 4? तो वही फिर से आपको प्राइम पता होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 पता होने चाहिए. दोनों में ओवरलैप तो नहीं हो सकता, बिकॉज प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7. प्राइम नंबर्स का मल्टीपल ऑफ 4. तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 50 नंबर तक आपके पास है. तो 50 नंबर तक लार्जेस्ट मल्टीपल इज 48. देयर आर 12 मल्टीपल्स आउट ऑफ 50. अब प्राइम नंबर्स तो मैन्युअली करना पड़ेगा हमें. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47 are the prime numbers up to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 prime numbers out of 50. So it will add up to 27 by 50. There you go. Manual question. There can be no overlap. आप बोलोगे सर आपने दोनों को माइनस क्यों नहीं किया एक बार यहाँ पे? क्योंकि there is no number which is prime and also multiple of 4. It cannot be prime and a multiple of 4. साथ में कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं आएगा, तो हम सब्ट्रैक्ट 0 कर देंगे. Try this. 2 dice are thrown simultaneously. What is the ratio of probability of getting the sum of dice is more than 10 to sum of dice is divisible by 4? थोड़ा आप संभल के देख के, बेसिकली दो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. 10 से ऊपर सम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है और 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है. उनका सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. बनाओ आप लोग, ट्राई करो. टेक 2 minutes, 3 minutes. तो 10 के ऊपर क्या आउटकम है? बेसिकली probability that the sum is more than 10. It can be 11 or 12. 11 बनाने के दो तरीके और 12 बनाने का एक ही तरीका. तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ए, ये आपकी आ गई 3/36. कुछ मत करो, लीव इट. अभी 4 से डिविजिबल चाहिए. 4 से डिविजिबल 4 होता है, 8 होता है और 12 होता है. 4 बनाने के तरीके 1 3, 3 1, 2 2. 8 बनाने के तरीके 2 6, 6 2,
3 5 5 3 4 4। दैट्स इट। 12 बनाने के तरीके 6 6। तो आपकी जो सेकंड प्रोबेबिलिटी है बी, वो है ये भी चलेगा और ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 9/36। हमें दोनों का डिवीजन चाहिए। तो 36 चला गया, ये चला गया 3 टाइम्स। प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो अब तक आपने ऐसे 5 क्वेश्चंस बना लिए हैं बेसिक्स वाले, जहां पर एडिशन चाहिए, मल्टीप्लिकेशन चाहिए ऑफ अ डाइस, 2 डाइस। तो नीचे 36 ही आएगा, प्लीज पे अटेंशन। दीज आर कॉल्ड कंपोजिट इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट्स। दो एलिमेंट साथ में आ रहे हैं, वी मल्टीप्लाई आउटकम्स। ये भी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है। देयर आर 10 बल्ब्स, 2/5 of the bulbs are fused। तो 10 का 2/5 is 4। 4 बल्ब फ्यूज्ड हैं, 6 बल्ब वर्किंग है, टोटल 10 बल्ब्स हैं। If 3 bulbs are taken out from the box, what is the probability? At least 1 bulb is fused। कम से कम एक तो फ्यूज्ड है। तो ये हो सकता है एक फ्यूज्ड है, 2 वर्किंग है, या फिर 2 फ्यूज्ड है, एक वर्किंग है। ये भी हो सकता है 3 के 3 फ्यूज्ड हो। ये कैलकुलेट करना आपको इजी लग रहा है, या मैं कह दूं 1 माइनस ऑल वर्किंग। आपने कहा 3 बल्ब सेलेक्ट होंगे, 3 बल्ब विल बी सेलेक्टेड एंड वी आर सेइंग एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी फ्यूज्ड। तो हो सकता है एक फ्यूज्ड हो, 2 वर्किंग हो, 2 फ्यूज्ड हो, एक वर्किंग हो, तीनों के तीनों फ्यूज्ड हो। तो 3 वैल्यूज कैलकुलेट करना ये इजी लग रहा है आपको, या ये इजी लग रहा है? ऑब्वियसली ये इजी। क्यों इजी होगा ये? क्योंकि आपको एक ही चीज निकालनी है। तो मैं कह रहा हूँ 1 माइनस ऑल वर्किंग। कितने वर्किंग है? 6। 6 में से 3 उठाना आपका काम है। टोटल बल्ब कितने हैं? 10। उसमें से 3 उठाना है सैंपल स्पेस। अब एक अच्छी बात समझो, जब ये डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन मैच करता है, 3 लिखा है, तो आप सीधे सीधे 3 नंबर मल्टीप्लाई कर दोनों जगहों पे। ऐसा अगर एक ही टर्म है न्यूमरेटर में, एक ही टर्म है डिनोमिनेटर में, दोनों का कॉम्बिनेशन मैच करता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस इज 10, ये ऊपर 20 है, 20 2 बार कैंसिल हो जाएगा। यहाँ का 2 4 बार, यहाँ का 2 3 बार, यहाँ का 3 1 बार। तो 1 minus 1/6, it is 5/6। Confirm this. That's it for today, guys. That's all for today. I would like to complete many more questions. बहुत सारा content हमारे पास, but you guys seem tired. We are at 25th slide and we have 80 slides in all. खूब content है अभी तो. So I'll see you guys in the next session with more and more questions. देखो easier भी है, difficult भी है. पहले 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे that we solved. फिर थोड़ा repetitive हो गया, that I understand. So we'll meet in the next session. See ya. Bye.